Children, let us focus on more sums of the same type, fundamental principle of counting. Now, seventh one. In a test, 5 questions are of the form state true or false. So I have 5 questions, true, false for the first question, second true, false, third again true, false, fourth true, false, fifth true, false. Okay, it's a very interesting question, children. No student has got all answers correct. It means किसी भी स्टूडेंट को 5 on 5 नहीं मिले हैं. There is no brilliant child in the class who has given all answers correct. Also, the answer of every student is different. इसका मतलब अगर किसी ने true, false, 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 false लिखा है, then there is no other child in the class who has got same answer. Means nobody has copied. No copy. All children are very honest. Copy भी नहीं हुआ है. So in that case, find the number of students appeared for the test. In such a scenario, how many students might have appeared for the test? Now see how to do this. Now I'll take first question. Now first question को answer करने के लिए a child has how many choice? 2 choices. या तो वो true mark करेगा या तो वो false mark करेगा. So the first question has 2 choices. Similarly, second question also has 2 choices. Third will also have 2 choices, either true or false. Fourth be 2 choices. Fifth be 2 choices. And every child has marked every answer. So number of ways हो जाएंगे right here. Number of ways will become every answer is marked. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना आएगा 32. ठीक है. Now I hope you might have not understood. I will tell a different example. Suppose I have 3 coins. 3 coins है मेरे पास. If I toss 3 coins, हर कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या है? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल. So if I toss 3 coins simultaneously, how many cases I have? 2 cube. This is 8 cases I have. कितने cases है? 8 cases. So in here also head tail, head tail, head tail, head tail, head tail. कितने coins हो गए मेरे पास? 5 coins हो गए. So when I talk about 5 coins, outcomes कितने आएंगे? 2 raised to 5, that is 32. इन 32 combinations जो होंगे and यहाँ पर 8 combinations जो होंगे, all are different. Means this case will not be repeated under any circumstances. 3 coins अगर मैं cases लिखता हूँ, all 8 cases are unique. Similarly, ये 32 cases क्या आएंगे? Unique आएंगे. और इन 32 केस में और इन 8 cases में one combination will be correct. एक set of combination correct हो सकता है. So also they have said कि एक भी आंसर बच्चे को 5 on 5 नहीं मिला है. So I will say number of students should be 32 minus 1, that is 31 students. अगर किसी को 5 on 5 नहीं मिले हैं, then there will be 31 students in the class. Okay, how many students? 31. You can try this with 3 coins, 4 coins, 5 coins. You'll understand. Okay. If not, please ask me. Now, 8th one. How many numbers between 100 and 1000? 100 और 1000 के बीच में, I know that number will be of 3 digit only. Number between 100 and 1000, such that 4 is in units place. क्या बोला है? 4 should be units place. So by default, units place is fixed. That is 4. So I can say that units place has only one way. कितना way है? One way, because 4 ही चाहिए. ना repetition, non-repetition कुछ नहीं बोला है. This place can be filled by which digits? 9 digits, क्योंकि 0 नहीं आएगा. So I can say hundreds place can be filled by 9 ways. कितने ways आएंगे? 9 ways. Similarly, tens place
पे 0 आ सकता है, so tens place can be filled by 10 ways. Tens place can be filled by 10 ways, correct? क्योंकि यहाँ पर 0 आ सकता है. Therefore total numbers ending with 4 कितना आएगा? By counting principle of multiplication, या आप orally भी कर सकते हो. You can sit and count 104, 204, 304, 404, 504 and so on. Total numbers कितने आएंगे? 90. Okay. Next, ninth one. How many numbers between 100 and 1000? Again same question. Such that they have digit 7 exactly once. अगर 7 यहां पर आया है तो यहां पर 7 नहीं आना चाहिए. सिमिलरली 7 एग्जैक्टली वंस बोला है, मतलब 7 यहां पर भी आ सकता है और 7 यहां पर भी आ सकता है, करेक्ट. एक बार 7 यहां पर आया तो यहां पर 7 नहीं आना चाहिए. यहां पर 7 आया तो यहां पर 7 नहीं आना चाहिए. यहां पर 7 आया तो यहां नहीं आना चाहिए. So let's talk about this. This can be filled by, okay, I'll talk about this. यहां पर 0 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा. 0 नहीं, 7 नहीं. So how many numbers I can have over here? 8. यहां पर सिर्फ 7 नहीं चलेगा. I can have 0. तो कितना आएगा? 9. और ये तो by default 1 है. So there will be 72 numbers which are having units place as 7. 72 numbers such that सिर्फ यूनिट प्लेस पे 7 है. क्या है? यूनिट्स प्लेस पे 7. Now see again, यहां पर I cannot have 7. 0 से लेकर 9 तक any digit except 7. So 9 ways. यहां पर 0 भी नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा. So how many ways? 8 ways. इसका तो 1 है. So ये भी कितना आएगा? 72 ways. करेक्ट. अब यहां पर 7 छोड़ के कुछ भी चलेगा. So 9 ways. यहां पर भी 7 छोड़ के कुछ भी चलेगा. 9 ways. This is 1. So how many? 81. तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन एंड आइदर दीज नंबर्स और दीज नंबर्स और दीज नंबर्स, तो इनको ऐड करेंगे. और मींस एडिशन. टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 5. 225 नंबर्स ऐसे हैं विच आर हैविंग 7 एग्जैक्टली वंस. क्या है? 7 एग्जैक्टली वंस. ठीक है. नाउ 10th वन. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स? क्या बोला है? 4 डिजिट नंबर्स बोला है. नॉट एक्सीड 7432. ये नंबर 7432 से कम होना चाहिए. यूजिंग द डिजिट्स 2347. 2347. रिपीटिशन नॉट अलाउड. इन 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर बनाना है which is less than 7432. So let us forget this condition right now. तो नंबर बनाते हैं 4 डिजिट. रिपीटिशन नॉट अलाउड है. This place can be filled by 4 ways. This by 3, ये 2 और ये 1. So I will have total numbers. कितना आएगा? It is multiplication. 12, 24 numbers. कितना आएंगे? 24. इसमें से बाय डिफॉल्ट एक नंबर चेक किया 7432 होगा. इफ आई फिल 7 ईयर, 4 यहां पर, 3 यहां पर, 2 यहां पर. लेकिन मुझे 7432 से छोटा चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए. सो आई विल हैव टोटल नंबर्स विच आर लेस देन 7432 इज 23. कितना आएगा? 23. अंडरस्टूड? यस. Next, 11th one. If numbers are formed using 2, 3, 4, 5 and 6. Numbers are formed using 2, 3, 4, 5 and 6 without repetition. How many of them will exceed 400? Number 400 से बड़ा चाहिए. मतलब number can be now 3 digit. Number can be 4 digit. And lastly number can be 5 digit. ठीक है. पहले by default ये सारे numbers तो 400 से बड़े होंगे
कि 4 डिजिट है। ये भी सारे नंबर्स 400 से बड़े होंगे क्योंकि 5 डिजिट है। पहले ये फिल करते हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड बोला है, so this can be filled by 5 ways, this can be filled by 4 ways, ये 3 ways, ये 2 ways, correct? Out of these 5, any one number will come here, so 5 choices. Out of 4, any one will come here, then 3, 2. कितना आएगा? 20, 60, 120. 5 into 4 into 3 into 2, 120 numbers बनेंगे 4 digit वाले, which are more than 400. Here I will have 5, 4. एक एक नंबर डिजिट कम करना है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो अगेन ये भी आएगा 120. हाउ मच विल गेट? 120. अब लेट अस थिंक अबाउट दिस. ये नंबर 400 से बड़ा चाहिए, सो दिस प्लेस कैन नॉट बी 2 and 3. कि 2 और 3 से लिखा है यहाँ पर, तो नंबर विल बी लेस देन 400. हमें क्या चाहिए? 400 से बड़ा. So this place can be filled by any of these 3 digits. This place can be filled by 3 ways. कितने ways? 3 ways. इन तीनों में से suppose 4 आ गया यहाँ पर, imagine करो. Then this place can be filled by 1, 2, 3, 4 ways. This place can be filled by 4 ways. इन चारों में से कोई तो एक आ गया होगा यहाँ पर. So this place again can be filled by 3 ways. Correct? 3 3s are 9, 9 4s are 36. So 3, 4, 3, 36. Total numbers कितने आएंगे? Which are more than 400. ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. So 240 plus 36, 276 numbers ऐसे होंगे which are more than 400. Understood? Yes. Okay, next one, children. It's 12th one, I think. Yeah. How many numbers formed with the digits 0, 1, 2, 5, 7, 8 will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated? So if I talk about 13 and 1000, the number can be of 2 digit and the number can be of 3 digit. तो 2 digit number 13 से बड़ा चाहिए. Correct? So I'll forget this 13 now. Let us make a 2 digit number. This place cannot be filled by 0. It tens place है. So this place can be filled by 5 ways. How many ways? 5 ways. Now here repetition is not allowed. So एक number यहाँ पर आ गया है. Suppose 1. Again there are 5 digits left. So there are 25 numbers. कितने numbers आएंगे यहाँ पर? 25. But इसमें 12 भी होगा by default और 13 भी होगा. मुझे 12 भी नहीं चाहिए, 13 भी नहीं चाहिए. So I will do -2. So I have 23 numbers over here. ताकि नंबर 13 से बड़ा हो जाए. कि 12 नहीं चलेगा, 13 नहीं चलेगा. Sorry, 13 will not come only. 25 minus 1, that is 24 numbers of 2 digit will be more than 13. अब 3 digit number चाहिए. Again, I'll start with this place. 0 नहीं आएगा. This can be filled by how many ways? 5 ways. Suppose 1 गया. How many are there now? 5. Again, this can be filled by 5 ways. And now this can be filled by 4 ways. तो कितना आएगा? 5 into 5 into 4, that is 100. So total numbers कितना आएगा? 1. Sorry, they have said digits repeated. I am extremely sorry. Okay, I have done for digits not repeated. Okay, repeated part you will do. I have done for digits not repeated. So total numbers for not repeated कितना आएगा? 124. For repeated cases you will try. Okay, repeated के लिए you will find the answer. Okay, next 13th one. A school has 3 gates. So school जाने के लिए 3 gates है. G1, G2, G3. And 4 staircases from first floor to second floor. 4 staircases है first floor से second floor पे जाने के लिए. S1, S2, S3,
S4. How many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on second floor? उसे गेट से क्लासरूम में जाना है. How many ways here? So first he'll select the number of gates. He has 3 choices. तीनों में से किसी एक गेट में से आएगा वो. So there are 3 ways he can enter the school. Then there are 4 ways to enter the second floor, from first floor to second floor. So total ways, वो गेट भी सिलेक्ट करेगा, स्टेयर्स भी सिलेक्ट करेगा. इट कैन बी G1 S1, G1 S2, G1 S3, G1 S4. So it is fundamental principle of multiplication. So answer आएगा 12 ways. How many ways he has? 12 ways. Okay. Now 14th one. How many 5-digit numbers? कितना डिजिट बोला है? 5 digit numbers बोला है. 1 2 3 5. From 0 1 2 3 4 5 are divisible by 5. क्या बोला है? Numbers 5 के टेबल में आने चाहिए. A number appears in 5's table if these are the possible cases. या तो यूनिट्स प्लेस 0 होना चाहिए, या तो यूनिट्स प्लेस 5 होना चाहिए. करेक्ट? आइदर दीज पॉसिबल केसेस और दीज पॉसिबल केसेस. डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड. तो सी ये 0 यहां पर आ गया है, यहां पर 5 में से कोई भी एक नंबर आएगा. सो 5 वेज. सो राइट 0 ओवर हियर. सो 1 वे. बराबर. सो यहां पर कितने आएंगे? नॉट अलाउड रिपीटेशन. 4 3 2. सो ये कितना नंबर्स हुए? 5 4 20 60 120. सो 120 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? 0 आएगा. 0 ऑन यूनिट्स प्लेस, ताकि वो नंबर 5 के टेबल में आएगा. देन अगेन यू विल राइट 1 वे 5 इन यूनिट्स प्लेस. क्या आएगा? 5 इन यूनिट्स प्लेस. वेरी स्पेशल केस. नाउ आई विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि 0 यहां पर नहीं आएगा, 5 भी यहां पर नहीं आएगा. ये गया, ये गया. So how many choices are there? I have 4 choices. कितने choice है? 4 choice. अब यहां पर suppose 1 डाल दिया होता, 0 ओपन हो जाएगा. बस here I can have 0. So 1 2 3 4. So इन चारों में से कोई एक नंबर यहां पर आएगा. Then automatically 3 यहां पर, 2 यहां पर. So कितना हो जाएगा? 4 4 16, 16 48, 48 2 96. So in all there will be 216 numbers. कितने numbers होंगे? 216. Okay? Yes. Okay, next one, children. Some extra problems. How many? Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags. Now it is said at least 2 flags on a vertical staff if 5 different flags are available. How many flags are available? 5 flags are available, and I have to generate different signals with at least 2 flags. It means एक सिग्नल में there can be 2 flags. It can also be 3 flags. It can also be 4 flags, or it can be maximum 5, because हमारे पास 5 फ्लैग्स है. करेक्ट? डिफरेंट सिग्नल्स बोला है, 5 फ्लैग्स है, तो दिस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 5 वेज. दिस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज. दोनों फिल करना है. सो माय आंसर विल बी 20 फ्लैग्स ऑफ 2 फ्लैग्स. 20 सिग्नल्स ऑफ 2 फ्लैग्स कैन बी जनरेटेड. बराबर. Now if I talk about 3, repetition not allowed है, तो 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3. So कितना आएगा? 60. Then यहाँ पर आएगा 5, 4, 3, 2. That is 120. At least word लिखा है, so I am taking all the cases. यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1. Again 120. Total flags कितने हुए हैं? 240, 300, 320.
So 320 signals can be generated with at least 2 flags. Okay. Now one more sum. How many 5-digit telephone numbers? एक 5-digit telephone number है. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using 0 to 9 such that each number starts with 6, 7 by default? Every number must start with 6, 7 and no digit appears more than once. कोई भी नंबर यहाँ पर फिर से नहीं आएगा. So now say this place can be filled by how many ways? 6 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए. So there are 8 numbers over here. Then यहाँ पर क्या आएगा? Repetition not allowed. So 7 and यहाँ पर कितना आएगा? 6. ये तो by default 1 है, ये by default 1 है. So total telephone numbers कितना आएगा? 8 into 7 into 6. So 8 7 are 56 into 6. That is 336 telephone numbers can be generated, or 336 people can be given connection in that area. Are you getting it? Yes. Let us take one more sum. One more good sum I'll take. Yeah. Suppose 5 chocolates. I have 5 chocolates of different varieties. Suppose Cadbury है, Bournville है, Temptation है, Gems है, and you can say Milky Bar है. 5 chocolates of different type are to be distributed among 4 children. 4 students में I have to distribute the chocolates, and there is no condition on how many chocolates a child can get, including 0. How many different ways are possible? Now there is no restriction how many chocolates can be given to a particular child. How will you see? And it can also happen that 5 chocolates सभी को मिले हो, या किसी को 5 मिले हो, किसी को 0 मिले हो. So what will I do? I'll take first child. Sorry, I will take first chocolate. ये कैडबरी जो है, ये कैडबरी इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है. So Cadbury can be picked up by any one of the student. So Cadbury के पास choice कितने हैं? 4. Cadbury can be given to anybody. So the Cadbury lucky draw में 4 choice में जाएगा, चारों में से किसी एक को मिलेगा. Similarly Bournville भी चारों में से किसी एक को मिलेगा. Similarly Temptation भी चारों में से किसी एक को मिलेगा. Gems भी चारों में से किसी एक को मिलेगा, और मिल्की बार भी चारों में से किसी एक को मिलेगा. So my answer will be 4/5. So these are the possible ways in which I can distribute chocolates so that anybody can get any number of chocolates. Okay, it is impossible to try such a situation at home. Still you can give a try with less number of chocolates and you can enjoy. Okay, the next lecture will be studying the actual permutation part and a new mathematical notation, factorial. I'll be introducing you about what is factorial. Okay, and then we move further with the topic. Okay, thank you.